morning, student. Hope all you are safe at your home. As we know about it, our chapter 21 documentary system is complete yesterday. Now we start our new chapter, chapter 28, male reproductive system, human reproductive system. As you know very well, what is the reproduction? Any living living organism reproduce their offspring. This is the process is called reproduction. Simple language कि कोई भी living organism अपने समान, अपने equal offspring develop कर रहा है. This is the process is called reproduction. Reproduction, all living beings, so many living beings have the capacity of reproduction. In this chapter, we'll talk about the human reproduction, because in the previous year of class 11, we talk about the so many animals of reproductive part, like cockroach, like rabbit. Now this is the 12th class. In 12th class, a total human physiology in your syllabus. So now we talk about human reproductive system. As we talk our previous videos that so many living organisms have the capacity of reproduce of their offspring. All living organisms generally give the examples of any plant, so many animals. These have the capacity of reproduction. In human beings, now we talk about human beings. In human beings have also the capacity of reproduction. A system is work for this reproduction process, and this system is called human reproductive system. And which system which work in the reproduction process, यानी वो system जो reproduction process में work कर रहा है, this system is called reproductive system. ठीक है? Now let's discuss our topic, reproduction, the process of reproducing offsprings in living organism. This is the process, reproduction. In humans, humans have the reproduction is sexual reproduction. यानी humans के अंदर जो reproduction process होता है sexual reproduction, and it is sexual dimorphism. What is sexual dimorphism? When we talk about dimorphism, it means the male and female characteristics, external structures. We know very well this is the male and this is the female. यानी जब हम मेल एंड फीमेल को बाहर से एक्सटर्नल पार्ट यदि हम उसका देखते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड दिस इज द फीमेल. दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. यानी हम इजीली जब हम नोन कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं मेल और फीमेल को, दिस इज कॉल्ड डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. नाउ वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम is divided in two types: male reproductive system and female reproductive system. When the reproductive system, which reproductive system is present in male, that we call the male reproductive system, and which reproductive system is present in the female, that we call the female reproductive system. Now first we talk about male reproductive system. Male reproductive system. Male reproductive systems, there are so many organs are present in any system. So the male reproductive system is divided in two types: primary reproductive organs and secondary reproductive organs. What is primary reproductive organs? This is the first necessary organs which are responsible for reproduction. That is the called primary reproductive organs, and जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा necessities इसकी है, that we call the primary reproductive organs. That is, the answer is, what is primary reproductive organ? One pair of testes are called primary reproductive organs. And secondary reproductive organs are which are helpful to reproduction process
These organs are called secondary reproductive organ. Just we talk scrotal sac, epididymis, vasa differentia, penis, prostate gland and Cowper glands. These all are the secondary reproductive organs, which are the help. These organs are the main organs is testes, and these are the parts of which are the helpful for reproduction process, and these organs are called secondary reproductive organ. Now we talk about the testes. It's a general introduction. What is testis and where it is situated? A pair of pink color. The shape is oval. Testis is situated abdominal cavity and in the middle of the both legs. In a testis is situated in our both legs का middle part. हमारे दोनों legs हैं उसके middle part के पास जो होते हैं testis की presence होती है. कलर कैसा हो गया? Pink. और shape कैसी हो गई? Oval shaped हो गई. Second चीज, wall of scrotal sac is flexible, यानी जो testis की बाहर जो layer होती है that we call scrotal sac. और scrotal sac is flexible यानी लचीली, thin, बिल्कुल thin layer की presence होती है. Thick subcutaneous layer made of unstripped muscles fiber that we call the dartos muscles. And in scrotal sacs there is a thick layer of presence of subcutaneous layer. Subcutaneous layer it means जो हमारी लेयर है क्यूटेनियस लेयर, यानी जो हमारी स्किन लेयर है उसके नीचे जो क्यूटिकल पार्ट के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट वी कॉल द क्यूटेनस सबक्यूटेनस लेयर कहलाती है. एंड मेड अप ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल्स विच आर मेड अप ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल्स. जो मसल्स है उसमें स्ट्रिप्ड मसल्स और अनस्ट्रिप्ड मसल्स. जैसे कौन सी मसल्स? अनस्ट्रिप्ड मसल्स से जो बनी हुई होती है वो कहलाती है डायटोस मसल्स. Second is cremaster muscles. Cremaster muscles means a rod-shaped bunch of stripped, joint, subcutaneous and abdominal subcutaneous muscles in testes. यानी पहली बात तो हो गई हमारी डायटोस मसल्स. और नेक्स्ट आती है क्रेमास्टर मसल्स. क्या होती है कि वो रॉड-शेप्ड मसल जो कि सेक्टोरल जो पार्ट है, जो सेक्टोरल जैसे हाफ और हाफ, इसकी सबक्यूटेनस और एब्डोमिनल सबक्यूटेनस लेयर को ज्वाइन करने का जो वर्क करती है, दीज आर कॉल्ड क्रेमास्टर्स मसल्स. ए नैरो inguinal canal is scrotal sac. Intestines have scrotal sacs which are the outer layer of testes, and scrotal sacs have a narrow inguinal canal. यानी canal की जो है वहां पर presence होती है. It is very clear that the dartos muscle. What is dartos muscle? Dartos muscle means wall of scrotal sac have a flexible, thin, thick subcutaneous layer. यानी स्क्रोटल सैक के नीचे एक सबक्यूटेनियस लेयर की प्रेजेंस जो होती है वो अनस्ट्रिप्ड मसल्स की बनी होती है दैट वी कॉल द डायटोस मसल्स. एंड क्रेमास्टर मसल्स रॉड शेप बंच जो कि सबक्यूटेनियस और एब्डोमिनल सबक्यूटेनियस मसल्स को ज्वाइन करने का वर्क कर रहा है, जिसे हम कहते हैं क्रेमास्टर्स मसल्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द टेस्टिस स्ट्रक्चर. दिस इज द outermost layer of testis. This is the main part of testis. This structures, this long-like structures, we call the sperms. Sperm is the main male reproductive part. This is the outer part of having special cells are present here. This is called the leading cells. In sperms, cells are present here that we call the Sertoli cells. Sertoli cells are present in sperms part, sperms का basic में. And the wall of the scrotal sacs is having some cells that we call the spermatogenesis. यानी spermatogenesis, sperms का जो formation हो रहा है वो after spermatogenesis से होता है. Formation of spermatogenesis. There are so many connective tissues also present in testis part. Testis के अंदर कौन कौन से हो गई? Leading cells किसके हैं? आउटर भाग में
जो इनर पार्ट है उसके अंदर स्पर्म्स की प्रेजेंट हो गई। स्पर्म्स का फॉर्मेशन किससे होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स के बाद में होता है। और स्पर्म्स के अंदर जो सेल्स की प्रेजेंस है वो कौन सी है? सर्टोली सेल्स उसके बेसिक पार्ट में प्रेजेंट है। और जो अदर्स जो सेल्स कनेक्ट हो रही हैं वो किससे कनेक्ट हो रही हैं? कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट हो रही हैं। तो दिस इज द मेन बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। रेगुलर डू योर स्टडी, नोट डाउन प्रॉपरली योर नोट्स। देखिए बायो सब्जेक्ट वैसे बहुत इजी है इन 12th क्लास। यू गॉट 100 आउट ऑफ 100 इफ यू रीड रेगुलरली, डू हार्ड वर्क। ऐसे हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी, जैसे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करा रही हूँ उसको आप नोट करें अच्छे से और ध्यान रखें। तो you got 100 out of 100 marks in bio exam if you do work hard and read carefully. Thank you. Have a nice day.